leaders from the industries, academia, friends from the print media and electronic media, ladies and gentlemen. It is indeed a matter of great opportunity for me and a happy occasion when we are here to be the part of the Advancing Public Health Outcomes Forum of 2025, along with the Women's Collective Forum and collaboration with the Gates Foundation and CII, and also with the partnership with Indian Council for Medical Research, National Institute for Malaria Research, Indian Council for Medical Research, National Institute for Tuberculosis, and Vector Control and Research Center of ICMR. I would like to first congratulate my esteemed colleague, Madam Smriti Zubin Irani ji, for organizing this program and taking the initiative and bringing various forums on one platform, and also going for a very ambitious program and helping the Government of India in the program of elimination of malaria, elimination of tuberculosis, elimination of lymphatic filariasis. I first of all thank you for your good and cooperative effort. I would also like to take the name of Center for Excellence for the Affordable Healthcare of IIT Kharagpur, whom we have involved in the whole process. We have just now seen the 4 reports which have been released today on malaria, on tuberculosis, on lymphatic filariasis, and immunization. I would like to share with you that under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, the health sector has taken a long leap. And it has taken a long leap because it has been a government of the past 11 years, which is responsive government, which is responsible government, which is accountable government, and which is a government which wants to see the change in the common human life of an individual. And for that I can say that in the health sector, if you talk about, it has been a monumental leap which has taken place in the health sector as far as the technology is concerned, as far as the technology-driven facilities being provided to the individual, and the innovation. And as Dr. Guleria told, and as it was also emphasized by Dr. Behel, we believe in Jan Bhagidari. So in all these programs, the people's participation has been the center of all schemes and programs, which has brought results and which has brought a change in the whole process, or in the whole goal which we want to achieve. When I talk about the India's transition, it is from the disease control to disease elimination. एक समय था जब हम भी चलते थे, मानवता भी चलती थी, बीमारी भी चलती थी, और हमारा प्रयास भी चलता था। सब साथ साथ चलते थे। अब समय बदला है। अब हम चलेंगे, मानवता चलेगी, और डिजीज को हम समाप्त करेंगे। इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। इसलिए इंटरसेक्टोरल अप्रोच को हम लोगों ने डेवलप किया। होल ऑफ द गवर्नमेंट एंड होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच को हम लोगों ने डेवलप किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, और इन सब चीज़ों को करते हुए we came out with a health policy in 2017, which when you say monumental leap, we also say about the change in the health thought process. Previously, the health thought process was curative. आप सुनते होंगे, हमारे डॉक्टर्स भी कहते थे, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, एंटीबायोटिक ले लो। ये आपने सुना होगा, you must have heard. चलेगा, परहेज की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक ये जरूर खाओ। With all due respects to Dr. Guleria and Dr. Behel, one is a pediatrician and one is a pulmonary expert, but still, ये एक आवाज़ थी। 2017 में we decided that prevention and promotion of healthcare is very important part of health. So prevention, promotion, then curative, then palliative, then geriatric
हर एक की चिंता करनी है, तो होलिस्टिक अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ अप्रोच, इट केम इन 2017 where the prevention health care and promotional health care को हम लोगों ने बहुत अहम तरीके से जोर दिया, जिसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और उसमें हमने रिहैबिलिटेटिव को भी जोड़ा. अभी when we were talking about आयुष्मान आरोग्य मंदिर, now this is the first contact point where an individual gets in touch with the health institution or a health facility. And the number is 1,81,000. And our intention is that if after every 2,000 or 2,500 population, there should be one Ayushman Arogya Mandir. So that, and it should have an ASHA worker, it should have a community health officer. So the first contact point, he or she should get the health facility. That is our intention. And these Ayushman Arogya Mandirs should be NQAS, National Quality Assessment Standards में, they should fit in. So NQAS भी हम कर रहे हैं, and I'll be happy to note that approximately 30,000 of the Ayushman Arogya Mandir have been NQAS. They have got the NQAS certificate, National Quality Assessment standards that they have maintained. Now, what we are trying to do is that, first of all, mother and child health. और मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कह रहा हूँ कि आज की डेट में हमने इस बात को इंश्योर किया है कि देश में कोई भी माता जिस दिन गर्भवती होती है, उस दिन से उसको हम डिजिटली ट्रैक करते हैं. The day, ASHA workers' responsibility is there that she should, the day a lady gets pregnant, उस दिन से हम उसको ट्रैक करते हैं. 5 essential, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया से लेकर के सारी चीज़ों में जो हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसके एफर्ट्स कैसे चल रहे हैं. 5 essential antenatal checkups is compulsory. 1 checkup with the specialist is necessary. 8 checkups for high-risk patients and 3 checkups, along in 8 checkups, 3 checkups should be done by specialists. And all this is tracked. ये हमारे बोलने से नहीं हो रहा है. This is all being tracked because digitally ASHA has to put in into her system that Kusum Devi का first checkup हो गया है after trimester, second checkup अब होगा, third checkup तब होगा. And if the checkup is not done, digitally there is an alarm and an alert system to the patient, to the ASHA worker, to the BMO, the block medical officer, to the chief medical officer, and to the mother and the child tracking system here in Delhi. Now you can understand how we are trying to see to it that mother and child ki checkups ko hum dhyan mein rakhe. I would also like to share with you that UWIN, वैसे कोविन में आपने काम किया तो you know कि, और उस समय जब हम लोग 2017, 16-17 में जब हम कोविन पे काम कर रहे थे, यानी we were trying to digitally come out with a solution so that we could track everybody. We never knew that pandemic like COVID is going to come. And it came. By that time, Government of India digitally was ready. So we had COVID. And you will be happy to note that the certificate given by America for a COVID vaccination is given on a piece of paper. And here you get the COVID vaccination certificate on your mobile. This is digital India. That is, you have to understand. The same way we have started UWIN. Now, what is UWIN? That during the pregnancy, 2 vaccination, after the delivery, and it is the responsibility of the ASHA worker to ensure that the delivery takes place in the institution. And that is why our institution delivery has increased from 79% to 89%, 87%. And we are going further in that direction, institutional delivery. And we have to vaccinate a child for 12 preventable diseases, 11 vaccines, 27 doses, from birth till the age of 16. And now this UWIN tracks for 16 years. So at any given time in our UWIN portal, a cohort of 5 crore
2.5 crore children and 2.5 crore mothers are always on the tracking system where we are tracking for them for the 16 years to come. So this is the change जो हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है और मदर और चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम को हम कैसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं. The same way, this Ayushman Arogya Mandir, it is the responsibility of them that the ASHA workers, along with the Anganwadi workers, along with the Panchayat Pradhan, along with the Panchayat ward members, they have to ensure that everybody at the age of 30 should come to the Ayushman Arogya Mandir and get themselves checked for dental care, for mental care, for hypertension, for diabetes, for males for oral cancer, and females for breast cancer and cervix cancer. So we are trying to see to this is the prevention part. At the age of 30, if one knows that he has hypertension, then he has to take care of his heart. If he has diabetes, he has to take care of his eyes, he has to take care of his kidney. In coming times, it may go for a renal failure. So this is how what we are working on it, and we are going forward. I'll come out with the figures, how much screening we have done later, but I would like to share with you, as abhi jab reports aayi usme se, the maternal mortality ratio was 130 per lakh live births in 2014, 11 years back. Now it is 88 per lakh birth, which is 42 points less. And the decline of infant mortality rate was 39 per 1,000 live births in 2014, which has been reduced to 27 per 1,000 live births. And if I talk about the under 5 mortality, the decline is 42% of India, and the global decline is just 12%. So we are much faster as far as the decline is concerned. Our decline is 42%, and the decline of the world, global decline, is 14%. So we have to understand that all these initiatives have brought a sea change as far as the mother and the child health care is concerned. That we have to understand. The neonatal mortality, if I talk about, the decline in India is 39%, and the global decline is 11%. So we have to understand that all these initiatives ne kis tarike se antar, and these are not my figures. These are not figures given by me. It is the figures of National Family Health Surveys. And if I talk about the mental health care, we have taken a very new initiative. Now in mental health care, what happens? Nobody wants to disclose that he has got a mental problem, or there is some problem. First of all, he does not realize that he has got a mental problem. If he realizes, he does not want to show to somebody. So we have started a telemanus. And through telemanus, we are trying to see to it that NIMHANS, the Bangalore Institute, the National Institute for Mental Health Institute, along with 32 other institutions, we are giving them teleconsultations. And more than 30 lakh teleconsultations have been done. This I would like to share with you. This is what we are doing for the mental health care. One more thing you will say, भाई आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तो डॉक्टर होता नहीं है, तो फिर इलाज कैसे होगा? We have started the hub and spoke model, where the community health officer has got the responsibility to connect with the doctor or patient to provider or provider to provider, and see to it that the patient gets the opportunity to have teleconsultation with the doctor, and the prescription is given by the doctor and it is administered by the community health officer. This is how we are trying to serve 1.4 billion people of the country. If I talk about, now I would like to share with you, if you talk about hypertension, we have screened 40 crore people, and out of which 6.8 crore people are found to be diagnosed with hypertension. Now this is prevention part. वो 6.8 crore लोगों को मालूम ही नहीं था कि they are hypertensive. In diabetes, we have screened 39.8 crores and diagnosed 4.6 crore. So you can understand that for diabetes also, these 4.6 crore people did not know that they were having diabetes. So this is screening, and this is how we are trying to bring a change in the. If you talk about cancer,
33.8 crore have been screened, and 2 lakh patients have been found to be diagnosed for cancer. So early detection is very important. If I talk about cervix cancer, 8.4 cancers ladies have been screened, and 90,000 have been diagnosed as being a patient of cervix cancer, and so early treatment has started. If I talk about breast cancer, 15.8 crore women have been screened till date, and 75,500 have been diagnosed and the treatment has started. All this I'm talking to you because I want to share with you that how early detection is going to help for a healthy life. Because ये preventable है, इसको prevent किया जा सकता है if timely intervention is done. So that is how we are working. Exemplary work के दृष्टि से अगर देखना हो तो in 2014 we were polio free. We have become neonatal and maternal tetanus free in 2015. Trachoma is now no more a public burden, a health problem. Kala-Azar we are now sustaining, only last year is left, where we are going to get the certification of WHO for elimination of Kala-Azar. One more year is left and we are consistently working on it. Lymphatic filariasis, mass drug administration is going on, and we are trying to reduce it to few blocks, which we are trying to intensively address, and we are moving in the right direction. Measles, rubella elimination, that is also in intensive monitoring is going on. We have just now come out with the report of malaria. I would like to share with you that we are the 1/6 population of the country, of the world, and the global malaria cases was 0.7%, and ours is global malaria cases is 0.7, and the malaria deaths is 0.6, and the high burden, the country has come from high burden to high impact state. High burden state country to a high impact state. And the decline is in malaria, in incidence is 80%. And the death decline is 78%. So you can understand that how much, and this is 2025 World Health Organization Global Report on Malaria. So you can understand that what intensive penetration the health department with public participation has been done, that we have to understand. If we talk about tuberculosis, it was 237 per lakh patients in 2015. Now it is 187. And the decline of India incidence is 21%, and the global decline is 12%. So we are much faster as far as the decline is concerned. And what we have done for it, as Randeep Guleria ji was talking, a lot of technological intervention has been brought in. Rajiv Behel ji, I would like to thank him that we have gone for TrueNat machines. पहले तो ये होता था कि स्प्रूटम जाओ, पहले तो ये होता था कि पहले खांसी होगी, फिर खांसी के बाद तकलीफ रुकेगी नहीं, फिर बुखार होगा, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, फिर डॉक्टर एंटीबायोटिक देगा, फिर वो दवाई, फिर भी खांसी नहीं जाएगी, फिर कहेंगे जरा एक्सरे कराओ, फिर थूक जांच कराओ, यानी 3 महीने ले लेते थे यही बताने में कि ट्यूबरकुलोसिस को है कि नहीं है. Now we have got a TrueNat machine. You take the sputum, cartridge में डालो, AI generated will tell you that this is abnormal sputum and this needs a further checkup, and it may be a TB patient. So early detection, fast detection. And now what we have done is, we have gone for handheld X-ray machines. And we have got mobile also. And what we are planning, we have got these X-ray machines are available in district hospitals. This year, we are going to bring it to CHC level, where there will be an X-ray machine, handheld X-ray machine, where you have to just take the X-ray, and AI generated that will tell whether this X-ray is normal or abnormal. If it is abnormal, you have to go for a further investigation, and this is how we are trying to detect tuberculosis at a fast pace. We have also increased 1,000, Prime Minister Modi has declared that 1,000 per month for every TB patient for their portion, and along with that, the Nikshay portion is there. For tuberculosis, we have also taken care of the vulnerable population. छोटी सी दुकान है, कारीगर काम कर रहे हैं, एक को ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो 11 लोग उससे कैसे बचेंगे.
तो सबकी टीबी की चेकिंग होनी चाहिए और दवाई पर उनको डालना चाहिए। उसी तरीके से जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस के जो एरियाज़ है उनको हम स्पेशल तरीके से कर रहे हैं। लास्ट ईयर वी हैड 100 days campaign. This year again we are going to have a 100 days campaign with the Jan Bhagidari and with all the member parliament. This is how we are working. Lot has been talked about Ayushman Bharat. मैं बार बार कहता हूं कि दिस इज अ गेम चेंजर, और यह जब हम कहते हैं ना कि देयर इज अ मॉन्यूमेंटल चेंज, व्हेन वी से दैट देयर इज अ लीप इन हेल्थ सेक्टर इन एड्रेसिंग द हेल्थ इश्यूज, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईश्वर ने कुछ ऐसी कृपा रखी मेरे ऊपर कि मैं जब पहली बार एमएलए बना तो भी हेल्थ कमेटी का मेंबर था, फिर जब मैं मंत्री बना स्टेट में तो भी मैं हेल्थ मिनिस्टर बना, जब केंद्र में आया तो भी मैं हेल्थ मिनिस्टर बना, अब दोबारा मंत्री बना हूं तो भी हेल्थ मिनिस्टर बना हूं। तो मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री की एक यात्रा देखी है, और उस यात्रा में मैं आपको बताना चाहता हूं, गरीब आदमी को हार्ट की डिजीज हो जाए मतलब डेथ वारंट, हमारे और आपके लिए नहीं, लेकिन गरीब आदमी के लिए डेथ वारंट होता था। बाईपास कराना पड़ जाए तो भीख मांगने की स्थिति आ जाती थी, कभी अपने एम्प्लॉयर से बोलता था, कभी कैसे बोलता था, और किसी घर में कैंसर हो जाए तो जमीन बिकने की नौबत आ जाती थी। और बुजुर्ग क्या बोलता था, हमारी जिंदगी तो पूरी हो गई, हमें तो छोड़ दो, बच्चों की परवरिश की सोचो। अब सोचिए इंडिया, भारत कहां खड़ा था, अब तुमने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचना है, मेरे इलाज के बारे में क्या सोच रहे हो, मैं आज नहीं जाऊं, परसों नहीं जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, अब मेरी जिंदगी में रह क्या गया है। ये हमने देखा है, और हमने एमएलएज और एमपीज को हमारे पास एप्लीकेशन लेकर के निवेदन करते हुए, अब वो शब्द अच्छा नहीं लेकिन एक तरीके से गिड़गिड़ाने के बराबर होता था कि भाई साहब इसको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट दिला दो, इसका बाईपास नहीं हो सकता, इसको स्टंट नहीं लग सकते, 1.5 लाख रुपए का खर्च है, ये नहीं दे सकता, और ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, ये कमाने से चला जाएगा। 2014 में 15 में प्रधानमंत्री जी से जब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात हो रही थी तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा इसके बारे में हम लोग को, तो मैं एक छोटी सी स्कीम लेकर के गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब सोचना है तो बड़ा सोचो, थिंक बिग, कोई बड़ा सोचो आप। मैं जरा डरते डरते गया, मैंने कहा क्योंकि हेल्थ पे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है, तो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के बारे में अब मैं मंत्रिमंडल का सदस्य होकर के इरेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता हूं कि मुझे फाइनेंस के बारे में जानकारी ना हो। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा नहीं बड़ा सोचो, फिर बड़ा सोचा गया। एंड हैप्पी टू शेयर विथ यू, आयुष्मान भारत is the world's largest health coverage program. और इस प्रोग्राम में कौन है, देखिए ये भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो कास्ट सेंसस नहीं, अपना मैं शब्द इकोनॉमिकली, वो आई फॉरगॉट द वर्ड, उस सेक्शन के जो लोग हैं, जैसे रिक्शा वाला, ठेले वाला, रेडी वाला, बाय प्रोफेशन, बार्बर, दर्जी, जूते का काम करने वाला, लिफ्ट मैन, हमारे अपने वेटर, होटल में बर्तन धोने वाला, ऐसे गरीब लोगों को जोड़ करके, और इसके साथ साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदरवाइज ऑल्सो, उनको जोड़ करके उस समय 10 करोड़ 72 लाख परिवार थे, जिसकी संख्या बनती थी 50 लाख, जिसको प्रधानमंत्री जी ने 70 साल से उम्र के ऊपर के लोगों को, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, फ्रॉम 70 टिल दे ब्रीथ देयर लास्ट, 5 लाख रुपीस का उनको हेल्थ कवरेज मिलेगा। ये आयुष्मान भारत बना, विच कम्स टू 62 crores, विच इज नियरली 40% प्लस पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और 5 लाख रुपीस का हेल्थ कवरेज देने का प्रोग्राम किया गया।
इसका फर्क क्या पड़ा? दो फर्क पड़े। एक तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भारत का 69% से रिड्यूस होकर के वह अब 39% आ गया है। और दूसरा इसका इम्पैक्ट ये आया कि लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि कैंसर के पेशेंट्स अब 90% ऑफ द कैंसर पेशेंट्स विद इन 30 डेज उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस विच हैज कम। इफ आई टॉक अबाउट द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मैं मेडिकल एजुकेशन पर नहीं आऊँगा क्योंकि वो एक उसमें भी बहुत परिवर्तन हुआ है। 387 मेडिकल कॉलेजेस होते थे, आज मेडिकल कॉलेजेस 819 हो गए हैं। कल दो और उद्घाटन करके आया हूँ, श्री गणेश करके आया हूँ, तो 821 हो गए हैं। तो मेडिकल कॉलेजेस सीट्स हमारे पास 51,000 मेडिकल सीट्स थी, आज 1,29,000 मेडिकल सीट्स हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमसे कहा है कि 2029 के पहले यू हैव टू इंक्रीज 75% सीट्स, 75,000 सीट्स यू हैव टू इंक्रीज। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। एक साल में हमने 16,000 सीट्स बढ़ाई हैं। तो मेडिकल एजुकेशन में वी हैड ओनली 1 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नाउ वी हैव गॉट 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो एक तरीके से हर तरीके के विकास के दृष्टि से एक काम मेडिकल एजुकेशन में हुआ है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो मिशन इंद्रधनुष हम लोगों ने शुरू किया, ये भी अब हमारे आउटकम्स को 2 दिन में नहीं पता चलते हैं। ये जो अभी मलेरिया की रिपोर्ट आ रही है, ये रिपोर्ट की तैयारी कोई आज की नहीं है। इसका काम अगर हमने कोई 8 साल 9 साल पहले शुरू किया होगा तो जाकर के ये रिपोर्ट आई है। तो उसी तरीके से मिशन इंद्रधनुष ने हेल्दी चाइल्ड और हेल्दी मदर के लिए जो काम हुआ है उसकी रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी हैं और आनी शुरू हुई हैं। लेकिन लगभग 5.46 चिल्ड्रन को इम्यूनाइज किया गया, 1.32 प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेट किया गया, और फुल इम्यूनाइजेशन नाउ हैज रीच्ड टू 98.6%. दिस इज चेंजिंग इंडिया, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो एक बहुत प्रयास हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से प्रयास हुआ है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम इनोवेशंस का पूरा सहयोग ले रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का पूरा सहयोग ले रहे हैं, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के साथ साथ अपने आप को जोड़ते हुए किस तरीके से 1.4, और अभी जब सेंसस आएगा तो वो 1.4 नहीं होगा, वो ज़्यादा ही होगा, तो उस पॉपुलेशन को हम केटर कर सकें, इस बात के लिए हम प्रयासरत हैं। हम आप सबसे सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहते हैं, वो ये कि आप कभी भी अपने हेल्थ सिस्टम के बारे में कई बार कुछ प्रश्न खड़े हो जाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं होना चाहिए, हम उसके लिए भी प्रयासरत हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बैड न्यूज़ ट्रैवल्स फास्टर, इसलिए वो खबर हमारे दिमाग में रह जाती है, पर हम भूल जाते हैं कि हमारे बहुत ही हेल्थ सिस्टम रोबस्ट सिस्टम के रूप में डेवलप हो रहा है। देखिए, कहना आसान है, अमेरिका वैक्सीनेशन 60% पर रुक गया कोविड में, यूरोप के देश 60-70% पर रुक गए, और ये भारत देश है जिसने 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगा करके दिया। और ये देश भारत कौन सा है? जिसमें द्रास है, जिसमें लद्दाख है, जिसमें कारगिल है, जिसमें छत्तीसगढ़ का कोंटा है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, हमारे गढ़चिरौली है महाराष्ट्र का। ये एरियाज, इन एरियाज में हमारे हेल्थ वर्कर्स ने जाकर के वैक्सीनेशन किया है। और ये छोटी घटना नहीं है कि अगर हम दवाई में भी जिस वायरस के उसके लिए हमने जिसकी दवाई बंद कर दी है, उसका भी अगर हमको प्रमाण किसी सिवेज में मिल जाता है तो हम सारे के सारे पोलियो की वैक्सीन की पूरी चेकिंग करके उसको बदल डालते हैं। ये हमारा रोबस्ट सिस्टम है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, आप सबके साथ मिलकर के स्वास्थ्य विभाग के में हम प्रयासरत हैं कि हम इसको रोबस्ट के साथ साथ मीनिंगफुल हेल्थ का बनाएं। और हमें खुशी भी है, मलेरिया में हम बहुत आगे निकल चुके हैं, ट्यूबरक्लोसिस में आगे निकल चुके हैं, और अब हम चलेंगे, बीमारी रुकेगी, मानवता बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
Hardik dhanyawad, sir. Ladies and gentlemen, we thank no